हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। हमने सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक घर बनता जरूर देखा होगा। एक घर बनता है टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से, जिसको हम कहते हैं ब्रिक या ईंट। जब मजदूर ब्रिक रखता है एक के ऊपर एक, तो वो एक सर्टेन तरीके से रखता है, एग्जैक्टली एक के ऊपर एक नहीं रखता। सिमिलरली our body is also made of a very tiny unit which is known as the cell. अब सेल जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यूज। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। मेनी ऑर्गन सिस्टम्स पुट टुगेदर मेक द ऑर्गेनिज्म. Today in this class we are going to study about the basic structure of every organism, which is cell. We are going to learn about the structure of the cell and the functions of the cell. अब सबसे पहले सेल, जो इतना टाइनी यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी है, उसको डिस्कवर किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक in 1665. Later, in the year 1674, Leeuwenhoek discovered that the cells move freely. This he did with the help of an improved microscope, because in order to see a cell, you need a very strong microscope. Now, it is important to understand that all living beings around us are made up of cells. चाहे हम बात करें अमीबा, पैरामीशियम, algae या फंगस की, these are basic simpler forms of life. These are also made of cells. Or whether we talk about higher organisms like human beings, plants and animals, all of us are made up of cells. Now in the year 1839, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक सेल थ्योरी प्रपोज करी थी, जो हमें ये बताती है दैट व्हाट एग्जैक्टली सेल्स आर. नाउ द लेटेस्ट सेल थ्योरी टेल्स अस दैट cells are the structural and functional unit of life. It also tells us that cells arise from pre-existing cells and that cells are the smallest unit of life. Now let us understand what are unicellular and multicellular organism. Uni का मतलब one, so unicellular organism का मतलब one cell, an organism in which one cell performs the functions that an entire living body is composed of. For example, amoeba, paramecium, euglena and bacteria are all single-celled organisms. Coming next to multicellular organism. Now it is estimated that a human body, a fully grown human body, contains about 100 trillion cells. This is the number of cells that make up a complex being like a human being. Similarly, different plants and animals are also made up of multiple cells, which may vary according to the size of the organism. The next thing to understand is the shape of the cell. Now, the shape of the cell is mostly round, but it depends from organism to organism. Amoeba की जो shape होती है, because it is a single cell, it is irregular. Bacteria की क्या shape होती है? Bacteria can be rod-like, spiral or comma shape. Coming to multicellular organisms. In multicellular organisms, all the cells have a different shape. For example, muscle cells are spindle shape. Then there are skin cells. There is the nerve cell which has got many fibers coming out of it. Then there is the cell in the buccal cavity, the white blood cells and the red blood cells. The shape of the cells in multicellular organism entirely depends on the function of that cell. The size of the cell also varies from individual to individual. It is believed that an ostrich egg is the biggest size of cell on earth. So cells vary from very tiny to a huge ostrich cell. And in order to observe a cell, it is important to watch it under an electron microscope by following a certain series of steps.
सेल इनविजिबल टू नेकेड आई होते हैं, सम सेल्स आर आल्सो ट्रांसपेरेंट। इसलिए जब हम स्लाइड बनाते हैं और सेल को उस पे रखते हैं, वी जनरली हैव टू ऐड अ डाई दैट एड्स कलर टू द सेल, जिसकी वजह से हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को समझ सकते हैं। Let us together understand the structure of a cell. So we all know that cells can be of different shapes or sizes, but it is important to remember that the cell structure as a whole is always the same. The cell consists of cytoplasm, cell membrane and nucleus as three main parts. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन एक आउटर बाउंड्री का काम करती है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ये सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने देती है। प्लांट सेल्स के अंदर एक एडिशनल सेल वॉल होती है which imparts rigidity to the plant cell. Do you remember studying about roughage, that if you eat uncooked fruits and vegetables they add roughage to the body? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुकिंग से सेल वॉल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, इसलिए प्लांट मटेरियल इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, whereas roughage के अंदर सेल वॉल इंटैक्ट रहती है. That is why it add bulk to your bowel. Now सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बन गए हमारे आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर. अगर हम बात करें इनसाइड द सेल की, सो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ जेली लाइक मटेरियल जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं. This material is rich in amino acids which provide nourishment to the cell. Now inside the nucleus also there are certain different kinds of cell organelles that are present. Now let us study about these one by one. Cytoplasm, as I told you, it contains many enzymes, amino acids, sugar and other molecules. Now cytoplasm helps to conduct hundreds of chemical reactions that take place. इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो एक्टिविटीज एक्चुअली कहाँ हो रही हैं? एक टाइनी सेल के अंदर. The nucleus controls all the activities of the cell. Nucleus contains a number of thread-like bodies called chromosomes. इन chromosomes के डिविजन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. इसीलिए क्रोमोसोम के अंदर जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफर होती हैं. Then let's come to the cell organelles. Now because the cell is a tiny factory जो एक पूरी लिविंग बॉडी के सारे फंक्शंस अपने अंदर करती है, that is why there are many different cell organelles, each of which performs a different function, which we are going to understand one by one. Microtubules are a network of fine tubes. This actually maintain the shape of the cell. Vacuoles. There are two kinds of vacuoles that are present in the cell. This is a sac-like thing. जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सेस फूड स्टोर करते हैं. जो वाटर वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सेस वाटर स्टोर करते हैं, एंड व्हेनेवर एन अपॉर्चुनिटी कम्स दे थ्रो इट आउट ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा है दैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी. दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ. इनका काम होता है प्रोटीन और लिपिड्स प्रोड्यूस करना. गोल्गी apparatus का काम होता है ऑर्गेनेल्स के अंदर से और बाहर से सामान आना जाना करना. Then we come to lysosomes. Lysosomes are present only in the animal cells. These contain harmful hydrolytic enzymes inside them, and this is why they are known as suicide bags. When a cell has to be broken down, the lysosomes burst open and the entire cell is dissolved. Ribosomes are tiny spherical bodies that are attached to the endoplasmic reticulum and they float freely within the cytoplasm. They help in protein synthesis. सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना. फ्लैजिला और सीलिया जो होते हैं वो सेल के सरफेस पे कभी कभी अटैच्ड होते हैं.
इनका काम होता है सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करना. Coming next to a typical plant cell. As you can see in this picture, a typical plant cell contains a cell wall. This provides extra rigidity to the cell. It also contains a central vacuole. Now, this central vacuole is filled with a watery fluid and it pushes the cytoplasm towards the boundary, creating space for storage of food. Then it also contains chloroplast. हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से होता है photosynthesis. So these are the major differences between plant and animal cell. So in this chapter, we have learned how the cell is the basic unit of all life forms on earth. We have also learned the differences between plant and animal cells. We have learned the functions of the various cell organelles in detail. Thank you.